Everyone, welcome back to my channel RN ArchiVision. I have come up with a new video of creating coordinates, which is one of the most important steps before starting any of your plans. And today we will learn a lesson of how to do coordinates using AutoCAD software. So stay tuned up till the very end. If you haven't taken a look over my previous video, I'll put the link in the description box and also in the above I button. You can easily access that and take a look over the brief intro to the AutoCAD software. So let's get started. So why are coordinates important while starting a flow plan? So coordinate is one of the most important step, the first step while you are starting working over any flow plan. So coordinates इतना ज़्यादा important क्यों होता है? Because when you are getting started with any of your flow plan, अगर आपके अतराफ in case आपके plot के अतराफ तीनों अतराफ अगर you have some neighbors, you have any buildings built up, तो आपको coordinates की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. You have your boundaries for your plot and you can get started with your design. आपका coordinate तब क्या होगा? It's going to be 0, 0, 0. But if in case it's a barren land and उसके बीचों बीच you have your plot, उसमें आपको boundaries बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है. And उसमें it is very necessary कि आपको coordinates हो and उस coordinates को use करते हुए you can form a boundary and within that boundary you can start working over your design. ठीक है? So now ये coordinates कैसे लाते हैं? ठीक है? So first thing is that when you have a site visit, जो surveyors होते हैं, they come up with this coordinates and आप picture में देख सकते हैं. This is how they actually come up with coordinates. वो coordinates हम as an architect लाके देते हैं and हम वो coordinates हम AutoCAD में डाल के we get started with our project. ठीक है? अब coordinates कैसे fix करते हैं? So first thing what you're going to do is, the first step is that you're going to just create a circle using the keyword CIR on your keyboard. ठीक है? And एक छोटा सा circle मैं यहाँ पर create करती हूँ. We're going to click over the circle and यहाँ पर towards your left आप यहाँ पर देख सकते हैं under geometry you have x-axis, y-axis and z-axis. Z-axis is always 0. हम अब change करते हैं x-axis को. So for example, I have this coordinate over here 359916.465. ठीक है 465 एंड इसका y कोऑर्डिनेट होगा 293.8033.682. ठीक है एंड आई एम गोना क्लिक एंटर. सो आप देख रहे हो यहाँ पर दिस कोऑर्डिनेट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन, राइट? सो दिस इज गोना बी माय फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड उसी तरह से यू गोना जस्ट क्रिएट अनदर सर्कल एंड पुट द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ योर प्लॉट. तो उसी तरह से यू गोना हैव 4 कोऑर्डिनेट्स. अगर 4 पॉइंट्स है तो 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके एंड यू गोना जस्ट यूज अ पॉलीलाइन and connect it from the center of the circle to the center of the other circle and उसी तरह से the third circle, fourth circle and back to the circle. तो उस तरह से आपका क्या होगा? आपका boundaries create हो जाएंगे and you can get started with your project. Thank you so much for watching my video. I hope you have learned how to create coordinates in AutoCAD software. Stay tuned up till the next videos as well. In the next video, I'll be teaching you a little tour of this AutoCAD software. मैं आपको बताऊंगी कि सारे tools क्या है, क्या नहीं है, and हम क्या-क्या use करेंगे and everything. And in the upcoming videos, I will also get started with the flow plan. मैं आपको basics से start करूंगी और हम लोग इंशाल्लाह प्रोफेशनल तरीके से हम करेंगे ये AutoCAD software को किस तरह से use करना चाहिए. I hope you have loved watching my videos. Please do subscribe my channel, share it with your friends and do like my videos. And up till next time, take care. Bye bye.